Hello, everyone. Welcome back to Elite Expertise YouTube channel. So my name is Arif Mohammed, and I'm one of the directors and lecturers at Elite Expertise. So today I'm glad to announce that we received our November batch KAPS examination results. And once again, Elite Expertise has proved to be the world's #1 training platform for KAPS examination. As Elite Expertise has got a massive success rate of up to 94%. So total 99 students have passed the exam in November batch from Elite Expertise. And today I'm so happy that we got our special guest, one of our students. His name is Rakesh Khan. So Rakesh is with us today, and let's know from Rakesh like what strategies he followed and how he prepared for the KAPS examination. Okay. So first of all, congratulations, Rakesh, and welcome to Elite Expertise YouTube channel. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So how do you feel on your success? Sir, I can't explain. Just because of you, I got this success. Just because of you, sir. Sir, you and ma'am. Just Yeah. because both of you, I got this success, sir. Thanks, Rakesh. Thank you so much. And Rakesh, can you just let us know from where you are and in which year did you graduate and so on, from which university you studied? Sir, my name is Rakesh, and I belongs to a small village, Jainpur Sadhan, district Okay. Karnal, Haryana. Yeah. And I studied at Managar just because my father is doing job here, government job here. And Okay. Okay. my graduation from Guru Gobind Singh College of Pharmacy. Okay. It was under Techno Kurukshetra University, Kurukshetra. Okay. And after completing my pharma education, I started marketing in Sun Pharmaceutical. I worked there for 6 and 5 months. I did. I joined Sun Pharma as a medical representative. After 5 years and 5 months, I was elevated as area sales manager. And after doing 1 year, after completion of 1 year as a area sales manager, I quit the job and started some marketing business of medicines. And after a few months, I joined retail business as a retail pharmacist. And from last 5 years, I'm working as a retail pharmacist in Yeah. hospital. Very good. It's nice to know about it, Rakesh. And Rakesh, may I know about how long have you prepared for this KAPS examination, and what made you to what mainly motivated you to move to Australia and to become a pharmacist here in Australia? Sir, sincerely telling, I started my preparation from July 2023. Okay. I take salary less break from my work, and I started to stay at home and Okay. start. I started the Preparation. preparation of this Okay. exam. And I never missed any live class. And you Any must live be seeing me in every class. And exactly. I Yeah. was the first man to join the class. As the link came, I just joined the class. Okay. And Yeah, yeah, exactly. I saw that like in all the lectures you were there, like in the live lectures. Okay. So that shows that how dedicated you are in clearing this examination and in preparing for this examination. So that's really good, Rakesh. And like we are so happy for you as you have cleared your examination in your first attempt. Okay. And Rakesh, may I know how strongly do you recommend Elite Expertise to your friends, and why do you want to recommend Elite Expertise? Sir, Elite Expertise is the best ever platform I have ever seen. Sir, if I tell you about my academics, I was below average student. Okay. If I can say, मैंने सर प्लस टू सेकंड अटेम्प्ट में किया है सर. प्लस टू मेडिकल मैंने See. सेकंड में फर्स्ट टाइम में फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्लस टू मेडिकल किया. और जो मेरी बी फार्मा का जो दौर रहा है सर, उसमें मेरी 10 सप्लीमेंट्री आई है थ्रू ऑफ द 4 ईयर. पर मैंने सर अपनी जी, जी. फार्मेसी जो है वो 4 ईयर्स में कंप्लीट की. मीन्स की Okay, टाइम okay. एक्स्ट्रा नहीं लिया. I'm extra विद 90. द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उसको कंप्लीट किया. और सर मार्केटिंग में जाने के बाद नॉलेज जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. हाँ, कुछ नहीं वो समझ तो में सही होता. है. गैप जो है जी. वो 11 ईयर्स का गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप था. 11 years gap. और Okay. स्टेमिना बनाना सर जो है वो इतना, स्क्रीन देखना, स्क्रीन टाइम सर इतना हो जाता था कि हाँ, 2 आवर्स का सर लाइव लेक्चर, उसके बाद उसको रिपीट देखना. और जी. बड़ी मुश्किल से स्टेमिना बना आंखों का कि अब इतना टाइम स्क्रीन मैं देख सकूं. Okay. आफ्टर दैट सर, जो सर मैंने फॉलो किया सर, इसमें मैंने कभी लाइव लेक्चर नहीं छोड़ा. और हमेशा मैंने, जब भी आपने बताया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से वन क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, डेफिनेट जी. आएगा,
वो सर मैंने कभी मिस नहीं किया, मैंने उसको हाईलाइटर से हाईलाइट किया। और सर मैं एक्चुअली, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कभी नोट्स नहीं बना पाया, पर मैंने जो मेरे हैंडआउट्स थे मैंने उन पे सब कुछ बड़े अच्छे से मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने एक्स्ट्रा लाइन बताई कि ये मेंशन कर लो, मैंने लिखा भी उसको। और मैंने, मेरे पास अब कोई बुक नहीं है फार्मा की, ना ही मैं किसी के इतने टच में हूँ। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ा, और आपका दिया हुआ जितने भी मॉक्स थे सर, मैं एक्चुअली मॉक्स में भी थोड़ा सा पीछे रह गया था, मैंने आपको बताया। और लास्ट टाइम पे सर आपने जो एग्जाम के 20 दिन पहले आपने जो मुझे स्ट्रेटेजी दी कि जो भी करो अच्छे से करना, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना, एग्जाम पास करने के लिए 50% चाहिए, ये ना हो कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कंसेप्ट बिल्ड ना कर सको। तो बस मैंने आपकी वही स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम पे फॉलो की जो आपने मुझे क्लास के एंड में दी, कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ के जाना, ये ना हो कि आप स्कोर कर लोगे और थोड़ा थोड़ा सबको हाथ लगाने के चक्कर में एग्जाम हाथ से निकल जाए। तो मैंने सर आपकी जो लास्ट टाइम पे जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे काम आई। और जो एलिमिनेशन मेथड सर आपने बताया कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो जो सही है वो सही क्यों है और बाकी सब गलत क्यों है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना। और जब जब से मेरा एग्जाम शुरू हुआ तो मैंने बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा, क्योंकि जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा था तो जल्दबाजी में मेरे से काफी गलतियां होती थी। तो मुझे आपकी वही बात याद आई एग्जाम के टाइम पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो सर मैं क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ता रहा क्वेश्चन को, और इंशाल्लाह मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया। जी हाँ। और आप सर, आप और मैम जो है वो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए हैं सर, और आप लोगों का जो मुकाम है वो बहुत बड़ा फरिश्तों से बात कम नहीं है सर। जी। ओके राकेश, थैंक यू सो तो मच, मैं थैंक सर यू। सर मैं यस इलाइट एक्सपर्टीज को, अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एजुकेशन लाइन में हैं, जो शॉप्स कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए फार्मासिस्ट शॉप्स रन कर रहे हैं, प्राइवेट शॉप्स, और जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फार्मा मार्केटिंग में हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इलाइट एक्सपर्टीज ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली। अगर राकेश कर सकता है तो कोई भी कर सकता है सर, मैं इतना कहूंगा। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को पता चला है कि मैंने कैप्स क्वालिफाई किया है, वो कहते हैं तूने कर लिया, तूने कैसे कर लिया भाई। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सर कोई भी कर सकता है। नहीं नहीं, मेरी ये सर हंड्रेड ऐसा परसेंट ऐसे कोई रिकमेंडेशन बात है। नहीं, लेकिन अगर जो भी हार्ड वर्क करते ना तो वो लोग का जो है डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, सो हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। It like it comes from both sides. So one is the efforts that we put towards preparing in you guys, and at the same time you also need to put the same sort of the efforts. Then definitely the success rate, it like 100% you will all the candidates will get succeed. Okay, so thank you so much. Thank you.